करूंगा आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिरला जी से। कृपया मंच पर पधारें। श्री कुमार मंगलम बिरला। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Rajnath Singh ji, Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Ministers, senior government officials, friends from industry, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. The timing of this investment summit in Uttar Pradesh holds, I think, very special significance. Just a few days ago, as we know, the Modi government completed 8 very successful years in office. I'm sure that you will all agree that this has been a period of epochal change. India has emerged as the fastest growing large economy in the world and is a testament to the growth and development that we have witnessed under the leadership of our beloved Prime Minister, Narendra Modi ji. Just last week, sir, I was in Davos, and it was striking to see how India dominated not just the conversations, but even the investment narrative. India today stands out as an investment destination in a world that is fraught with turmoil. Dynamism in policymaking, transparency and administration, stability in governance, and a relentless focus on reforms have been hallmarks of the NDA government. Honorable Prime Minister, I can tell you, sir, with first-hand experience, given our group's presence across 36 countries, the world today recognizes India's prowess. Our Prime Minister has also championed cooperative federalism on the one hand and also championed competitive federalism on the other hand. The scale of this global investment summit is perhaps another marker of that. Personally, for me, it is truly a pleasure to be here in Uttar Pradesh and participate in this program. In the 1950s, when India was in its early stages of development, Hindalco, the metals flagship company of the Aditya Birla Group, took root in Renukut, which was then a remote corner of Uttar Pradesh. Since then, the Renukut factory has grown almost 100 times. Hindalco has grown to be amongst the largest aluminium companies in the world, and our group has expanded in many, many more businesses in Uttar Pradesh and, of course, globally as well. Here in Uttar Pradesh, our presence spans diverse sectors, including cement, chemicals, carbon black, and financial services. Over the years, our group has invested over 40,000 crores in the state, and today we offer direct and indirect employment to about 35,000 people. Our community initiatives span 450 villages and meaningfully touch the lives of over 1 million people annually. Our CSR projects focus on healthcare, education, the girl child, sustainable livelihood, and infrastructure. For example, we run 11 schools in Uttar Pradesh that provide quality education to 10,000 students. Through our connect with the government's ongoing Nai Pahel project, we have helped transform 180 government schools in 8 districts of Uttar Pradesh. Therefore, we are deeply invested in the progress of the state, and so it is very heartening to see the metamorphosis, the huge change that the state has been going through, most remarkably under the dynamic leadership of our Chief Minister. UP has become today clearly one of the most attractive destinations for investment in India. As they say, double engine की सरकार के चलते विकास को मिली एक नई रफ्तार. I noticed that there are 3 distinct signs of the huge transformation that is underway here in UP. First is the significant strides that the state has made in terms of ease of doing business. As some of you might know, in the central government's annual rankings, UP has jumped to the 2nd position in the latest survey released in 2021 from being in the 14th position in 2016. It has implemented 186
of the 187 reforms suggested by the Union government. The Nivesh Mitra portal, which is a dedicated single window system, has also won huge appreciation from investors both in India and globally. Second is the vote of confidence from foreign investors. The state has received FDI of over 880 million since October 2019, despite the COVID pandemic. The amount of FDI received during this period was more than what was received in the previous 2 decades. Third is the scale and speed with which the state is upgrading its infrastructure. In the last few years, Uttar Pradesh has embarked on mammoth infrastructure projects like the Purvanchal Expressway, the RRTS or the High-Speed Regional Rapid Transit System, and a slew of other new airports. All these initiatives, to me, demonstrate the intent to transform and to transform at a neck-break speed. One can palpably feel the rapid strides of progress in the way UP is progressing under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath ji and the guidance of our Prime Minister Modi ji. As an early investor in the state's journey of industrialization, we feel very enthused by this new phase of Uttar Pradesh. It is no longer a state that is content being a lagging follower in the nation's economic journey. Rather, it is a keen leader of India's evolution to a $5 trillion economy. When it comes to ease of doing business or building new age infrastructure, UP is setting an example for other states to follow. At the end of the day, ease of doing business is about an experience, and our experience with the administration has been truly wonderful. I personally look forward to this continued support as we continue to accelerate our investments in Uttar Pradesh across businesses. Our cement business, for example, is investing 5,000 crores in cement grinding capacities in Shahjahanpur and near Lucknow. Several of our other businesses, namely carbon black, aluminium, and financial services, have large investments in the pipeline to be made in the next 3 years. I would like to take this opportunity to assure Chief Minister Yogi Adityanath ji and the administration that we will always and continue to be active partners in the remarkable development journey of Uttar Pradesh. I will conclude by taking inspiration from a Hindi couplet that aptly captures the story unfolding in front of our eyes. जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम बिरला जी। अब मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा हीरानंदानी समूह के अध्यक्ष श्री निरंजन हीरानंदानी से कृपया मंच पर आएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्री राजनाथ जी, dignitaries and my dear friends, यूपी के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आज आया, यहां आना मैं एक बड़े सम्मान की बात समझता हूं। मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी डबल इंजन वाले अंदाज में काम कर रहे हैं। उनका जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो आर्थिक विकास के क्षेत्र में बुलेट ट्रेन जैसा है। वास्तव में मेरा बेटा दर्शन, जो ऑडियंस में बैठा है, जिसने हमारे डेटा सेंटर डिवीजन की स्थापना की, उसने कहा आइए हम यूपी सरकार के साथ बातचीत करें और कोशिश करके देखते हैं एक नई दिशा की ओर आगे बढ़कर। अनुभव अपने आप में एक उदाहरण होता है।
उत्तर प्रदेश में मेरा अनुभव तो बेहद शानदार और अद्भुत रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ स्पीड ऑफ इन्वेस्टमेंट सक्सेस गजब का है। मैं आज 40 वर्षों से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूं और ऐसे चमत्कार नहीं देखा मैंने। आइडिया से लेकर डिलीवरी तक 1500 करोड़ रुपए की सोफिस्टिकेटेड परियोजना, वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर को 24 महीने की अवधि में पूरा करना किसी भी देश के लिए गर्व की बात है। क्रोनोलॉजी प्रस्तुत करता हूं। 2020 के अगस्त में बातचीत हुई, लैंड अलॉटमेंट अक्टूबर में, दिसंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग, 2021 के फरवरी में पूरे अप्रूवल्स आ गए। हमने मार्च 2021 में निर्माण कार्य शुरू किया और आज मैं बड़े ही गर्व से साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस साल अगस्त में हम पहले डेटा सेंटर के साथ लाइव हो जा रहे हैं। साथ ही उसी डेटा सेंटर पार्क में दूसरी इमारत का निर्माण भी शुरू कर रहे हैं। मैं बड़ी नम्रता से यह अनुरोध करता हूं कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसी शुभ आरंभ के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहें और इस अवसर पर हमें आशीर्वाद दें। हम यूपी में अगले 5 साल तक हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए सिर्फ डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसी हमारी योजना है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आज इस मंच पर पूरे दावे से कह सकता हूं कि यूपी की वर्तमान सरकार जो वादा करती है उसे पूरा भी करती है। मैं, मेरा बेटा दर्शन और योटा के सीईओ सुनील गुप्ता, उनकी पूरी टीम यूपी के सरकार और प्रशासन के दिल से आभारी हैं। इन्होंने हमें अपने साथ काम करने का एक अच्छा मौका दिया। वैसे तो योगी जी और यूपी सरकार की पूरी मशीनरी योटा के लिए हेल्पफुल रही है, फिर भी विशेष रूप में श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अरविंद कुमार जी, नरेंद्र भूषण जी का योटा धन्यवाद देना चाहता है। मैं सभी से कहता हूं, वर्तमान यूपी सरकार आपको सफल बनाने के लिए आपका साथ काम करती है। एक बार मैं पुनः आप सभी इन्वेस्टर्स का उत्तर प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्री निरंजन हीरानंदानी जी। There are reputed foreign investors and companies also participating in this groundbreaking ceremony. I now very humbly request Mr. Matthew Arias of Air Liquide France to kindly come on dais and share his views. Namaste. Bonjour à tous. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji, Honorable Minister for Industrial Development Shri Nand Gopal Nandi ji, respected dignitaries and distinguished guests, dear sirs, dear madams, I wish to thank the Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji for his invitation and the unique opportunity offered to Air Liquide to be in front of such a distinguished audience today. It is my honor and great pleasure to represent Air Liquide at this groundbreaking ceremony and share with you about our latest investment in India. This is the 5th oxygen production unit to be built and operated by Air Liquide in India, and with an investment of 350 crore rupees, about 40 million euros, this illustrates our renewed commitment towards Uttar Pradesh. This new plant, located in Mathura district at Kosi, will produce 350 tons of oxygen, nitrogen,
and argon, and will enhance our capacity to serve our customers in North India, boosting the state economy and creating job opportunities. This unit, to be commissioned by the end of 2023, is also designed to fulfill the medical oxygen demand in Uttar Pradesh and to serve various segments of the local industrial ecosystem. In particular, our products would be used for manufacturing applications, welding, cutting, for environmental preservation, wastewater treatment, and will contribute to the decarbonization of hard-to-abate sectors like the cement industry. The Air Liquide Group is committed to sustainability objectives with a reduction of 1/3 of its CO2 emission by 2035 and the achievement of carbon neutrality by 2050. In this regard, our commitment is to start to operate the plant in Kosi with 40% green energy. Air Liquide is very proud to be joining the community of Uttar Pradesh, and we look forward to successful partnerships with the citizens, the businesses, and the authorities for many years to come. I would like to now thank the Uttar Pradesh authorities who are working diligently to make this region a preferred destination for foreign investors. Thanks to the constant collaboration between our respective teams and the frame of the oxygen production promotion policy launched by the Uttar Pradesh government, we were able to expedite the funding of this project together with a strong financial support. This land allotment has been done in a very short time frame, illustrating the high level of cooperation. And I wish to specifically mention and sincerely thank the professionalism and constant support from the Department of Industries, Invest UP, UP Side A, Nevesh Mitra and Mathura administration. On behalf of the Air Liquide Group, I would reiterate our strong commitment towards progressive investments in India in the coming years, in air separation plants, in healthcare, in specialty gases and related areas. We are keen to act for the people of India, the energy transition, and we will proudly advocate India as an attractive business destination to various global companies. Dhanyavad, thank you. थैंक यू सो मच मिस्टर मैथ्यू आयरिस। हमारे बीच लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कृपया सभागार में उपस्थित महानुभावों को संबोधित करने के लिए मंच पर पधारें। आकस्मिक रूप से मुझे आमंत्रित किया है, मुझे जानकारी नहीं थी पहले से, इसलिए माइंड में कभी नहीं कर पाया मैं। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, सभागार में मौजूद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जिन लोगों ने कि उत्तर प्रदेश में निवेश किया है, ऐसे उद्योग जगत से जुड़े मेरे सम्मानित महानुभाव, यह मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। शायद इसीलिए मुझे यहां पर कुछ कहने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इस उत्तर प्रदेश का, चूंकि मैं मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं, शायद यह भी सोचकर उन्होंने आमंत्रित किया होगा। चूंकि हमारा यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पधारे हैं, इसलिए हृदय की गहराइयों से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस कर्मठता के साथ उत्तर प्रदेश को एक न्यू हाइट देने के लिए, नई ऊंचाई देने के लिए काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत विस्तार में जाकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कर्मठता,
उनकी काल्पनिक क्षमता और त्वरित गति से किसी भी काम का निस्तारण होना चाहिए, इसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। यही कारण है कि शायद उत्तर प्रदेश में निवेश तेजी के साथ बढ़ रहा है और आज पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पर ईज ऑफ डूइंग के मामले में भी आकर खड़ा हो गया है। वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा भारत कभी ईज ऑफ डूइंग के मामले में 142वें स्थान पर 142 इस पोजीशन पर था, आज वह आकर 62 की पोजीशन पर हमारा भारत खड़ा हो गया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा कितनी तेजी के साथ बढ़ी है और उनका एक विजन है कि भारत का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए और इसी सोच के आधार पर सतत प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों में भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है तो उसका श्रेय यदि दिया जाना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ बोलता था, उसकी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाता था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो लोग कान खोल कर भारत की बातों को सुनते हैं। यह हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की बनी है। आप सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए महानुभावों का मैं विशेष रूप से यहां पर अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारत के सबसे बड़े राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है ही, और मैं कह सकता हूं रिसोर्सेस के मामले में भी यह भारत और स्किल के मामले में भी हमारा यह उत्तर प्रदेश किसी से कम नहीं है। और आप सबने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश करने का फैसला लिया है, मैं जितना इस प्रदेश को जानता हूं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जितना प्रदेश सरकार के द्वारा सहयोग आप सबको प्राप्त हो सकता है वह निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह पूरा का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। कामों का निस्तारण कितनी तेजी के साथ हो रहा है। अभी हमारे किसी सम्मानित उद्योगपति ने यह बतलाया कि 1 महीने के अंदर एक मामले में क्लियरेंस हमको मिल गई, दूसरे मामले में 15 दिन में मिल गई, 2 महीने में मिल गई। इसकी संभवतः पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और मैं कह सकता हूं यह सब ये जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसके पीछे विजन और मार्गदर्शन यदि किसी का है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सदैव मुख्यमंत्रियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना, घंटों उनको समय देना और साथ ही साथ कंसेप्ट देना, आइडियाज देना, यह प्रधानमंत्री जी की प्रकृति है। और नजदीक से मैंने देखा है अद्भुत काल्पनिक क्षमता के धनी हमारे यह प्रधानमंत्री जी हैं। आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देते हुए अपना